सेकेंड ईयर में हो फिर भी मेनिंजाइटिस के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सो व्हाट इज मेनिंजाइटिस? द इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेनिंजेस इज नथिंग बट द मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजेस, इससे पहले हम लोग मेनिंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो मेनिंजेस इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवरिंग रहती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो 3 टाइप्स के मेनिंजेस रहते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकोनॉइड मैटर एंड पायो मैटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो ड्यूरा मैटर के जो ऊपर का लेयर रहता है, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो ड्यूरा मैटर स्कल बोन के नीचे और ड्यूरा मैटर के ऊपर का जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एपिड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरा मैटर और अरेकोनॉइड मैटर के बीच में रहता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और जो अरेकोनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में रहता है उसको बोलते हैं सब अरेकोनॉइड स्पेस। और जो हमारा सब अरेकोनॉइड स्पेस रहता है उसके अंदर अपना CSF रहता। तो इस CSF में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता, इसकी वजह से हमारा मेनिंजाइटिस हो जाता। तो अगर हमारा मेनिंजाइटिस अगर सिर्फ ड्यूरा मैटर हुआ है तो उस ड्यूरा मैटर का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको हम लोग पैकी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और लेकिन अगर पाया मैटर और अरेकोनॉइड मैटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसको लेप्टोमेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो लेप्टोमेनिंजाइटिस इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द पैच मेनिंजाइटिस। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं एटियोलॉजी। सो एटियोलॉजी में there are 3 types of meningitis, as one is the acute bacterial meningitis, one is acute viral meningitis, and third is the chronic bacterial meningitis or tubercular meningitis. So acute bacterial meningitis के अगर causative agents देखे जाए तो adults में Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae. Then in neonates, it is a Streptococcus agalactiae, that is group B streptococci, and in elderly Listeria monocytogenes. Then viral की अगर viral meningitis की अगर पॉजिटिव एजेंट्स देखे जाए तो एंटेरोवायरसेस, इकोवायरसेस, कॉक्सिकी वायरसेस और HIV वायरसेस। और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस उसमें अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ट्रेपोनोमा पैलिडम, दैट इज सेफिलिस। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, acute viral meningitis and chronic tubercular meningitis. So CSF appearance, normally CSF का appearance रहता अपना clear and colorless, but in case of chronic acute bacterial meningitis, so in acute bacterial meningitis a CSF becomes cloudy in appearance. In acute viral meningitis the CSF becomes clear or turbid in appearance, and in chronic meningitis the CSF becomes cobweb in appearance. So there is a production of cobweb or fibrin thread formation in case of chronic tubercular meningitis. Then after CSF pressure, second point is predominant cells. So generally in the CSF there are about 0 to 4 lymphocytes per microliter, but in acute bacterial meningitis there is a very large increase in the number of neutrophils, that is about 100 to 10,000 neutrophils per microliter in case of acute bacterial meningitis. Then in acute viral meningitis, that is also known as lymphocytic meningitis, in which there is increase in the lymphocytes which is about 10 to 100 times, and in chronic or tubercular meningitis there is increase in lymphocytes again, but here there is a large increase, that is about 100 to 1000 lymphocytes per microliter. Then after cells, we will look forward for CSF pressure. So in normally the CSF pressure is about 60 to 150 mm of water, but in acute bacterial meningitis it will exceeds to about 180 mm of water, that is it is increased in acute bacterial meningitis. In acute viral meningitis also it is about 250 mm of water, so it is also increased in acute viral meningitis. And in chronic tubercular meningitis it is about 300 mm of water. So in chronic tubercular meningitis also it is also increased. Then glucose. So normally glucose in the CSF is about 50 to 80. It is 50 to 80 mg per dl, but in case of acute bacterial meningitis the glucose will decrease, so it will decrease in case of acute bacterial meningitis. In viral meningitis the range for glucose in the CSF is normal, and in chronic tubercular meningitis there will be decrease, but the difference is that in acute bacterial meningitis there is marked decrease in the glucose, but in chronic tubercular meningitis there is relatively lesser decrease in the glucose levels. Then protein levels. So level of protein normally in CSF is
15 to 45 mg per dl, which is elevated in the acute bacterial meningitis, normal in the acute viral meningitis, and also elevated in chronic meningitis, but it is markedly elevated in the acute bacterial meningitis. And lastly, the bacterial culture. So in bacterial culture, in the acute bacterial meningitis or pyogenic meningitis, we can see various causative organisms, that is Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, or Streptococcus agalacti. But in case of viral meningitis, there will be sterile culture, and in a chronic tubercular meningitis, there will be growth of tubercle bacilli. After that, in microscopic features, so you have to draw diagrams in the pathology examination, H&E diagrams. So you can draw the neutrophilic infiltration in the subarachnoid space in case of acute bacterial meningitis, and you can draw the caseating granulomas in case of tuberculous meningitis. And in case of viral meningitis, acute viral meningitis, you can draw a lymphocytosis, that is increased in the lymphocyte count in that space, subarachnoid space. So that was all about the meningitis. If you want the notes for this meningitis, then just comment notes.